Quarter 2 turned out to be an interesting quarter for both FMCG and manufacturing companies. Some faced margin pressure due to inflation, while others benefited from a softer raw material cost. And today, we are looking at two major players from these sectors, Marico and MRF. One of the company posted its highest revenue growth in 17 quarters, and the other reported a double digit jump in profits thanks to easing raw material cost. Hi everyone, welcome back to the channel. And today we are breaking down the quarter 2 FY26 results of Marico, one of India's most trusted FMCG brands, and MRF, the country's iconic tire manufacturer. So first let's talk about quarterly results of one of the India's most trusted FMCG companies, Marico Limited. सो मारिको इंडिया का एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है जिसके मेजर ब्रांड्स हैं पैराशूट, सफोला, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, बियर्डो, जस्ट हर्ब्स, फ्लिक्स, ट्रू एलिमेंट्स एंड कंपनी का बिजनेस मेनली दो मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड होता है इंडिया बिजनेस which contributes around 77% of revenue and international business around 23% of revenue. Now if we see the Q2 results, तो ये एक ऐसा क्वार्टर था जिसमें कंपनी ने मल्टी क्वार्टर हाई रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है, लेकिन साथ ही में मार्जिन प्रेशर्स भी फेस किए हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई कमोडिटी प्रेशर. कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो वो था अराउंड 3,482 crores which is up by 31% year on year and it is the highest growth in 17 quarters. EBITDA was around 560 crores, 7% year on year up, and EBITDA margin at 16.1%, which is down by 350 basis points, and this pressure was due to inflation. PAT was up by 8% year on year. India business revenue was at 2,667 crores, which is up by 35%. Volume growth at 7%. International business 20% growth and constant currency growth. So overall, growth was solid, but margins were stressed. But why? Let's see this in detail. तो कंपनी के इंडिया बिजनेस ने स्टेबल डिमांड दिखाई है एक्सेप्ट सितंबर जिसमें जीएसटी चेंज के चलते थोड़ा ट्रेड डिस्ट्रप्शन हुआ बट फिर भी 95% प्लस पोर्टफोलियो गेन्ड और सस्टेन द मार्केट शेयर एंड 75% प्लस ऑफ द पोर्टफोलियो और द ब्रांड्स दे सस्टेन्ड और इंक्रीज द पेनिट्रेशन और ये दिखाता है मैरिकोज ब्रांड्स आर एक्सट्रीमली रेजिलिएंट. ऑल्सो जो हमने इतना मैसिव रेवेन्यू बूस्ट देखा है दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स क्योंकि कोपरा, वेजिटेबल ऑयल, क्रूड डेरिवेटिव्स सब में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई था. इसलिए मैरिको ने कोर पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग प्राइस हाइक्स लिए और इसी वजह से रेवेन्यू जूम 31% बट मार्जिन्स फेल ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉस्ट प्रेशर. और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की तो बांग्लादेश, मैना एंड एक्सपोर्ट्स ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है और सारे ही मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ है जिससे ओवरऑल टॉप लाइन काफी स्टेबल रही है. Now, if we talk about the segmental revenue, तो Parachute, which is the coconut oil, इसके लिए this quarter was very tough. 3% volume decline and copra price hyperinflated, जिसकी वजह से कंपनी को फोर्स प्राइस हाइक्स करनी पड़ी और साथ ही में इंस्टीट्यूशनल कस्टमर सप्लाई को राशन किया ब्रांड प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. वहीं दूसरी तरफ वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स रहे. 16% value growth, second consecutive quarter of double-digit growth, 150 basis points market share gain और mid और premium segment से काफी strong traction देखने को मिला. बात करें सफोला edible oils की तो उसकी volume flattish रही but revenue was up by 19%. High pricing environment की वजह से mainly volumes affect हुई थी. And next, the foods business, which is company's fastest growing divisions, Saffola, True Elements, and Plex Foods. So here the food business grew 12% year on year. Annualized run rate crossed 1,100 crores. Saffola Oats in सब में से number 1 brand रहा and company ने काफी strong D2C traction देखी. अगर हम बात करें प्रीमियम पर्सनल केयर की तो डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो विच इज बियर्डो, जस्ट हर्ब्स एंड प्लेक्स इस ब्रांड्स ने 1000 crores का ARR क्रॉस किया and also this category is scaling fast and moving towards profitability. Now we talk about the future outlook of the company and see what Marico is doing in FY26 to 27. तो सबसे पहले कंज्यूमर सेंटिमेंट काफी इंप्रूव हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन ईज हो रही है, क्रॉप आउटलुक इज हेल्दी
एंड ऑल्सो जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की वजह से डिमांड काफी बूस्ट हो रही है. अबाउट 30% ऑफ इंडियाज बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू जीएसटी रेट्स. ऑल्सो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी ड्यू टू पेनिट्रेशन गेन्स, डायरेक्ट रीच मार्जिन्स because of Project Setu and company का focus on premium and urban portfolios and strength in Saffola, VHO and foods. फूड बिजनेसेस को लेकर कंपनी ने काफी एम्बिशियस और बोल्ड गाइडेंस दी है. अकॉर्डिंग टू कंपनी दे आर एक्सपेक्टिंग फूड बिजनेस टू ग्रो एट 25% plus CAGR and aim is to reach around 8 times of FY20 levels by FY27. Already the food business is at 1,100 crores run rate and it's expected to become around 25% of India revenue by FY27. If we talk about digital first portfolio scaling fast, then Beardo is doing double digit EBITDA margin this year. Plix is having single digit EBITDA. Digital first portfolio is expected to reach 2.5 times of FY24 ARR by FY27 and expected to hit double digit EBITDA by FY27. If we talk about international business target, then Marico is aiming to maintain double-digit constant currency growth and premiumization across markets, also scaling fast at around 24% CAGR in FY21 to 25. Now, overall, if we see the margin outlook, so margins are expected to improve gradually because input cost inflation is expected to ease and operating leverage benefits would be there. Also, mix shifts towards the premium and food would lead to better profitability, and also there is expected better profitability from digital brands. So overall, Marico ने Q2 में एक explosive revenue growth deliver किया, but margins पर inflation का pressure रहा. तो आगे चलकर कंपनी का फोकस क्लियर है, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस, फूड बिजनेस को एग्रेसिवली स्केल अप करना एंड डिजिटल ब्रांड्स की प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनेशनल मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द सेकंड कंपनी which is MRF. इंडिया की सबसे आइकॉनिक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक एंड दिस कंपनी विच हैज मेनली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर्स. सो लेट्स सी इसके Q2 के FY26 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं. सो ओवरऑल इफ वी सी तो कंपनी ने एक काफी स्टेडी ऑल राउंड परफॉर्मेंस डिलीवर करी है in which we can say there is a strong profit growth and stable revenue. Revenue is at 7,379 crores, which is up by 7.2% year on year. Total income is at 7,487 crores, which is up by 7% year on year. EBITDA is up by 11.3% year on year. PAT is up by 11.6% year on year. So overall, profitability is strong, margins have improved, and revenue is at stable level. Now, why did the performance improve? What were the major key drivers behind this performance? So the main reason was कि raw materials का cost काफी ज़्यादा soften हुआ. कंपनी का क्लियर स्टेटमेंट था कि Q2 प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई बिकॉज मेनली द रॉ मटेरियल प्राइसेस कूल्ड ऑफ एंड टायर इंडस्ट्री का लार्जेस्ट कॉस्ट हेड होता है नेचुरल रबर एंड क्रूड बेस्ड इनपुट्स और दोनों का ही प्रेशर इस क्वार्टर में काफी कम था और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन्स पे पॉजिटिव हुआ. अगर हम बात करें OEMs की तो वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली है. OEMs विच आर द ऑटो कंपनीज. नॉर्मली Q2 में मॉनसून्स की वजह से सेल्स काफी सॉफ्ट होती है बट ये क्वार्टर एक एक्सेप्शन था. OEM सेल्स डबल डिजिट से ग्रो करी. पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर, CV स्पेस सब में डिमांड काफी ज्यादा सॉलिड थी और ये एक काफी पॉजिटिव साइन है बिकॉज OEM ग्रोथ मीन्स इंडस्ट्री अपसाइकिल काफी स्केल और स्ट्रॉन्ग कर चल रही है. ऑल्सो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा कंपनी का डिस्पाइट द टैरिफ्स. कंपनी ने हाईलाइट किया है कि एक्सपोर्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. ग्लोबल डिमांड स्टेबल रही है. MRF ने सिक्योर किया एक बेटर ट्रैक्शन इन प्रीमियम कैटेगरीज एंड टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस के बावजूद एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं. नेक्स्ट जीएसटी रेट चेंज इम्पैक्ट, क्योंकि इस क्वार्टर के सेकंड हाफ में जीएसटी रेशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट आया जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट टायर सेगमेंट में एक टेम्पररी शोडाउन देखने को मिला बिकॉज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेड प्राइस रिडक्शन बट गुड पार्ट इज दैट this GST reduction is expected to boost volumes going forward, especially replacement tire segment में. अब अगर हम कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मेनली कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जीएसटी रिडक्शन की वजह से डिमांड बूस्ट होगी क्योंकि रिप्लेसमेंट मार्केट इंडिया का लार्जेस्ट टायर सेगमेंट है और जीएसटी रेशनलाइजेशन से प्राइसेस लोअर होंगे, डिमांड पिकअप होगा.
रिप्लेसमेंट साइकिल एक्सेलरेट होगा और ये एमआरएफ के लिए डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सेलरेटर है। सेकंड, सॉफ्टनिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, जिसकी वजह से सस्टेन मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा बिकॉज रबर प्राइसेस, क्रूड लिंक्ड इनपुट, केमिकल्स सब में स्टेबिलिटी आ रही है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी वजह से बेटर ग्रॉस मार्जिन होंगे, बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर हम ओईएम की डिमांड की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग रहने का एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑटो सेक्टर का साइकिल पॉजिटिव चल रहा है, पैसेंजर व्हीकल स्टेबल हैं, टू व्हीलर में भी देयर इज रिकवरी, सीवी डिमांड इज इंप्रूविंग एंड दिस इज गिविंग एमआरएफ कंसिस्टेंट वॉल्यूम विजिबिलिटी। If we talk about export opportunities, so MRF premium tire categories में काफी aggressively compete कर रहा है। Company focuses on high value tires, international OEM orders and non-tariff markets. Premiumization in exports will support the margins. So overall we can say कि MRF का Q2 काफी stable रहा। There were margins improvement and double digit PAT growth and raw material softening ने profitability को majorly boost किया। ओईएम डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही और जीएसटी रिफॉर्म्स से आने वाले क्वार्टर्स में भी रिप्लेसमेंट टायर डिमांड और ज्यादा एक्सेलरेट होगी। यानी कि एमआरएफ इज हेडिंग इनटू एफवाई 26 to 27 विद बेटर मार्जिन्स एंड स्ट्रॉन्गर ग्रोथ। So to sum it up, I can say that quarter two was a quarter of two very different stories. Marico delivered explosive revenue growth but felt the heat on margins due to massive inflation, while MRF enjoyed margin recovery and profitability, and all thanks to softening raw material costs and strong OEM demand. But the bigger picture is surely clear because both the companies are entering FY 26 to 27 with a stronger demand visibility. GST reforms will surely boost the volumes, premiumization is accelerating, and margins are set to improve structurally. So that was all for today's video, and if you found this breakdown useful, make sure to hit the like button, subscribe to the channel and share this video with someone who follows Indian markets. Thank you for your time.